पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आज मुझे स्वागत करते हुए रितिका मैम का बहुत हर्ष हो रहा है। और आप सभी को पता होगा कि इनकी रैंक 11 आई है 66 बीपीएससी में। इनको ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और इनका माध्यम इंग्लिश है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जीएस 1 जीएस 2 में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन दिस 66 बीपीएससी एग्जाम वी हैव सीन। तो आज मैम से हम थोड़ी टेक्निकल बात करना चाहेंगे और इनसे पूछना चाहेंगे कि जीएस 1 और जीएस 2 की क्या स्ट्रैटेजी रही है, और जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो इसे कैसे तैयार करें। मैम की बुक लिस्ट क्या रही है, क्या उन्होंने फॉलो किया है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो उन्होंने कैसे टाइम मैनेज किया और बहुत कम टाइम में इतना अच्छा उन्होंने किया इस एग्जाम में। तो लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर मैम, प्लीज वेलकम मैम। Hello, ma'am, हाँ am यू, I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल मैम, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, ma'am. Good evening, everybody. दिस इज ऋतिका रिति। और मैं आज GS1 और GS2 का स्पेशली फोकस करना चाहूंगी जी कि GS1 में मेरी स्कोर 198 रही है। वो जी, हाँ, इट्स नॉट हाई, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। यस। एंड इन GS2 इट्स 156 or 157 अराउंड, which is still one of the highest, not the हाईएस्ट, highest. या। So GS1 and GS2 is a short trick. मैं बोलूंगी ये बहुत शॉर्ट में एक ट्रिक है। हम्म लाइक प्रीलिम्स के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मेंस के लिए इट्स वेरी स्मॉल सिलेबस, वेरी क्रिस्प। हम्म फॉर स्टार्टिंग विद GS1, वी हैव, अब सबको पता है कि तीन यहाँ पे टॉपिक्स है। पहला हो गया आपका स्टार्ट्स DI, हम्म, सेकेंड इज हिस्ट्री, एंड थर्ड इज आफ्टर करंट अफेयर्स विच इज नेशनल एंड इंटरनेशनल। जी। तो स्टार्टिंग विद DI, बहुत हम्म सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, उन लोग के लिए इट्स एसेसिबल। हम्म, बट काफी ऐसे हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो मैथ्स के नहीं है। जी। तो फॉर देम बिफोर प्रीलिम्स यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ। एक क्वेश्चन आप DI का रोज बनाओ। ये क्या ओके। होगा कि आपके मोनोटोनस प्रिपरेशन में एक थोड़ा चेंज आएगा, आपको थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा और मन लगेगा। एक हम्म, क्वेश्चंस में कुछ नहीं जाता, आप जो स्क्रॉल करोगे फेसबुक या इंस्टा उस बीच में, उससे अच्छा आप एक DI का क्वेश्चन बना लो उतने में। तो फॉर एग्जैक्टली। एवरी डे, मतलब स्टैट्स और मैथ्स ये एक दिन का नहीं है कि आप एक दिन में सॉल्व करोगे एंड यू विल स्कोर 72 आउट ऑफ 72। हाँ। इट इज अ रैंडम, इट इज अ वेरी कांस्टेंट प्रोसेस। हम्म DI इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। तो आप बिफोर प्रीलिम्स आप बना सकते हो इफ यू आर नॉन साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड। ओके। विद द केस ऑफ मैथ्स एंड साइंस बैकग्राउंड, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी बीटेक हूँ, तो हम्म मुझे लगता है कि आफ्टर प्रीलिम्स यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट टू विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हम्म उसे पता चलेगी आपको कि क्या क्वेश्चंस, BPSC का क्या ट्रेंड है। हम्म DI के बहुत सारे रेंजेस होते हैं, बहुत बार ट्रिपल ग्राफ आते हैं, बहुत बार दो ग्राफ आते हैं। हमारे CSAT में या फिर कहीं और जैसे कैट के एग्जाम्स में ट्रिपल ग्राफ आते हैं। लेकिन BPSC एग्जैक्टली। का एक ट्रेंड है कि वहां सिर्फ दो ग्राफ, बहुत हुआ तो एक ग्राफ पे वो लोग वर्क करेंगे। तो हाँ। यू विल गेट द ट्रेंड कि हाँ, वी हैव टू डू अ पाई और अ बार, पाई जैसा भी आपका रहता है, और वो हाँ। चार या तीन क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन रहते हैं चूज करने के। तो DI का आपका जो बेस है तो वो तो रहेगा ही, प्लस प्रैक्टिस एवरी डे आफ्टर प्रीलिम्स। एक हम्म पूरे क्वेश्चन जिसमें 5 या 6 क्वेश्चंस रहेंगे, एक पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस, कहीं से भी रैंडमली आप कोई भी ईयर का निकालो और उसे सॉल्व करो। एंड ओके। सिर्फ सॉल्व करना इज वेरी इजी। अगर आज हम दे तो जितने स्टूडेंट्स, द पीपल 8,000 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन मेंस, दे कैन हम्म इजीली सॉल्व ऑल द DI क्वेश्चन। बट द यस। प्रॉब्लम इज टाइम। हम्म वो टाइम बाउंड मैनर में आपको वो सॉल्व करना है। लाइक एग्जैक्टली। आप जितना टाइम DI में बचाओगे, आप उतना मार्क्स ऊपर जाओगे। हम्म यू हैव अ टाइम और अ स्टॉप वॉच विथ यू, कि आपने हर एक सेट में कितना सेकंड सेव किया। दिस एग्जैक्टली। सेकंड्स विल कंट्रीब्यूट फॉर योर इंटरनेशनल एंड नेशनल GS, हाँ। जिसमें आपको थोड़ा थिंक करना पड़ता है। उसमें थोड़ा हम्म ऐसा नहीं है कि आपकी पूरा याद किया हुआ मटेरियल आप लिख दो। वहां थोड़ा आपको एनालाइज करना है, क्वेश्चन पैटर्न को देखना है, उस हिसाब से आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दैट टेक्स टाइम। तो उस ओके। टाइम को हम सेव करेंगे फ्रॉम DI। हम्म DI आपका मेकर और ब्रेकर है BPSC का, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज 64th में मैंने दिया था BPSC, और DI के 72 क्वेश्चंस में से छूट चुके थे। And हम्म I missed the prelims by 9 marks just because of हाँ। DI. So DI is the maker or breaker of BPSC. If you are यस। good in stats, देन आपका जो पेपर है, तो बहुत सारा का क्वेश्चन आता है कि मैम स्टार्टिंग में करे DI या लास्ट में करे DI हम्म या बीच में दे। तो यू वर्क अपॉन योर स्ट्रेंथ। इफ यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, वेरी गुड इन, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, हाँ। स्टार्ट विथ स्टार्टिंग।
लाइक आपका 72 का 72 मार्क्स सही होगा, देन देयर विल बी इम्प्रेशन बाय इन्विजिलेटर कि हाँ ही इज अ वेरी नाइस गाय. सो Yes. ये इम्प्रेशन विल कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट क्वेश्चंस. लाइक Yes. पहला दो आपने बनाया, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा, दिस परसेप्शन, एक होता है ना, एक फेस बिल्कुल. होता है, वो आपका जी. फेस वैल्यू बन जाएगा डीआई. एंड दे हम्म. विल जज यू अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन डीआई. So, Yes. though I was not confident in DI, so I kept Hmm. it in the middle. I Okay. started with history first, Hmm. and the second is the history. Okay. So history took the previous year question, जितने भी आपके पास previous year question of history, Hmm. divided into like tribal. 3 to 4 questions come from tribal. Hmm. Munda is there, then Santhal is Santhal there. is there. Hmm. Uh-huh. And a holistic tribal revolt in India as well हाँ. as in Bihar. Hmm. So you can divide it in different section, non-cooperation and all. You can divide it in section and make a footnote, at least a footnote in home, Hmm. and just reproduce it in the exam. No need of any innovation in history. Okay. BPSC does not demand innovation in history. Just what you have marked up in your notes, just reproduce it in the exam. You will Yes. just save 4 to 5 minutes in history by not making it something new or innovating it. Innovation takes time in exam. These Hmm. 4 to 5 minutes you can again use in GS. Okay. So you have 72 marks in maths, 72 marks in history. So Yes. 144 is in your pocket. By Yes. just this 144 in your pocket with saving 10 to 15 minutes in international and national current affairs. Yes. So I just solved history in very less 20 minutes, I guess. Oh, 20 minutes, two questions. okay. Two questions. Because everything was in my everything was in Uh-huh. my mind. I just Okay. vomited it. Literally, I vomited it. Understand. Yeah, yeah. You just, yeah, And after copy that, I paste. attempted. Yeah. Just Okay. no brain, nothing. Just what is Okay. there? Patna Kalam. I started with Yeah. Patna Kalam and ended with full stop. Yeah. No Understand. innovation, nothing you need, because Hmm. all you have prepared in beforehand. Okay. This 4 to 5 minutes will help in GS. Hmm. And if you Yes. take some extra time in DI, so it will Hmm. help in DI as well. Yeah. So two hurdles across. The third is most Current. Yeah. important, Yeah. is GS, which includes current affairs, national as well as international. Yes. And at times, BPSC asks some indexes. Hmm. Some indexes like a health happiness index or some Yeah. other some other millennium development goals. Yeah. These indexes are being asked. So Hmm. try not to attempt these indexes which are a bit tricky, as well it demands much of data. We Because cannot even if you remember. don't have Hmm. if you don't know the data, the Hmm. answer is wrong. You have lost all your marks in one Hmm. question. So try not to. If you don't have any option, then you go for that. Try not to attempt all these questions which require much of data, which you do Hmm. not have, which generally people don't have, of Yeah. millennium development goals. This data we don't generally remember. Yeah. Try to attempt questions from international affairs. You'll Okay. get a map. You all have a map of in your mind of Hmm. world. If I tell you to connect India with relation with India and Afghanistan, Hmm. I have you everybody have a map of India and Afghanistan. You can Yeah. easily connect in short points in Hmm. connect India and Afghanistan. Like that, make 10 to 15 points of all the neighboring countries with India. Hmm. BPSC has a trend of asking questions from India and its neighbor Yes. somehow or the other. So make a habit of making all the probable questions. You can frame your own. Make a gist of 30 to 40 questions, current affairs, which are being burning topic. Like BPSC is known for burning topic. They'll not ask trivial matters, which are being asked in UPSC. They'll Hmm. ask like bricks. They will Yeah. ask SCO. These are all Yeah. burning topics. Every day Yeah. we'll see some or the other things from these matters. Hmm. So BPC is known for that. 165th they have asked about America Australian bushfire. So Uh, all these questions are very burning. The topics are very much prevalent in the like today Twin Tower. Yes, hmm. BPSC can answer. This is the whole India today watched 2:30 p.m. news. The Yeah. whole India. Exactly. The So these live. are the you Hmm. don't you don't need to just even turn the newspaper. It's every day live and flashing. And Hmm. BPSC is known for that. They'll ask Afghanistan, India, Chahabar Port. These all things are very common. Yeah. Even So you Rohingya can they make asked.
Rohingya, Myanmar issues they Yeah. asked. Yes. So, which are the burning topics? You can even see what are burning. You Hmm. will be a BPSC board maker, and you just make 40 to 50 important current affairs. That I am quoting, burning and important Hmm. current affairs. And from that, you make short photo notes, not like a essay on that. You Hmm. can make 10 notes, 10 to 15 points on pros, cons, way forward, what you can do, what we can do, what India can do for that, way Okay. forward, and some other points, and a good conclusion, which should Hmm. be holistic. A good conclusion, because the invigilator does not see the main parts. What are your points? They will not look, because they have to check hundreds of copy. Yes. So what is important? Pros, like India is having a relation with Pakistan, yes, or China. So Hmm. what are the pros? What are the cons? Yes. What the world can do? Indian diaspora in Pakistan, in China, whatever, Yeah. and some other multi-dimensional topics you can include on that essay, on that question. Multi-dimensional. What is effect? Political, Yeah. economic, financial. What the 10th? It's still 10th. What else subjects you have studied? Hmm. Just keep it there. Yeah. Just Just add on. yeah, 360-degree view of Just everything. Yeah. then it will the invigilator will have a very nice impression. Yes, Hmm. ये बच्चा सिर्फ एक तरफ नहीं, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है उनका। हाँ. ये आपका एक इम्प्रेशन आएगा, जिस थॉट को आपने या हमने नहीं सोचा, अगर किसी ने उसे लिखा है, तो दिस विल गेट अ ब्राउनी पॉइंट्स, एडेड पॉइंट टू देम। वो Hmm. आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट करेगा। वेरी सून आई एम गोइंग टू कलेक्ट माय कॉपी फॉर आरटीआई, सो आई विल Hmm. आल्सो डिस्प्ले दैट एज वेल, Sure, सो यू ma'am. कैन सी हाँ. माय आंसर्स। You can see my answers. It will have a holistic approach of an answer. Hmm. Like एक तरफ से तो सब सोच रहे हैं, आप क्या अलग कर रहे हो जो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। Exactly, That's ma'am. what BPSC, because they are bored with checking India, Afghanistan, this photo, Yeah. this okay, अरे वही चीज, and this Vision IS material, everybody will come and paste Yeah. that. Way Yes. forward, everybody will paste that. What Yes. is different in you, which Hmm. makes different from other, Yes. this will add to your marks. Okay. So it's all international. Yeah. Prefer international questions. You will have 2 to 3 maps on that. You will have diverse opinion from that. You can Hmm. also quote some external affairs ministers quotations, Yeah. like from Afghanistan. You can quote ki, instability in dockyard is not good for India, like that. Hmm. You can also quote some quotations which will add कि हाँ ये बच्चे ने सिर्फ pros and cons and way forward नहीं किया है, उन्होंने और भी बहुत सारे स्टेटमेंट को भी कोट किया है। Hmm. और कुछ ऐसा प्रीवियस में भी हुआ हो, जैसे अफगानिस्तान का प्रीवियस का भी पास्ट में तालिबान रूल हुआ, तो यू कैन गिव अ स्टार्टिंग में हिस्ट्री, यू कैन गिव, मेक इट स्मॉल, नॉट अ लेंथी लाइक 2 pages Hmm. for history, no. What the question demands, just answer that. At the Hmm. same time, have a picture or overline outline of what all things happened in the past. Like Hmm. in one page you can in the sideline you can make a timeline, a Yeah. timeline from 2000 this happened, 1999 this happened, no, just Hmm. a timeline for a outlook ki ha Yes. he knows the background, he knows the background, they will have Hmm. a outlook ki ha he knows or he she knows the background. Yeah. That's all. And a very nice conclusion gives you Hmm. extra marks. This is Okay. from my experience, a very Yeah. nice conclusion. Hmm. Make give 1 to 2 minutes more for conclusion. This will Hmm. add for your marks. Like Okay. think and then write, because the invigilator is damn sure going to read your conclusion. Hmm. He will just analyze what because conclusion is the concise or the summary of what you have written, Hmm. and what are your opinion apart from that. So Yes. you can also quote at times, you can also quote from my opinion, and it's not you are not a you are not a specialist, so you don't have any opinion. You just quote the opinion which is being opinioned by someone else, Yeah. like Subramaniam Swami has said this, Hmm. and it's true from my point of view. It's true Yeah. as said. It's true is as said by. Yes. What your opinion is being supported by someone's opinion. Yeah. Or That's some all. data or And something like that. or sub, yeah, and make sure the data should be correct. You cannot Hmm. just randomly out of 100, India is around 50 to 40. No, Hmm. if you know the data very well and precise and it's correct, you can add it on, or else no need for because it will create a confusion कि इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये इधर उधर कर रहा है सिर्फ, ये एक impression create होगा. So if you know the data very precisely, just add on. This will give you definitely nice marks. Yes. The अच्छा. second is Okay. GS2, ma'am. नो जस्ट आई विल आस्क ना, व्हाट आर द, जैसे करंट के लिए मैम आपने कैसे अप्रोच लिया था, क्या क्या बुक्स फॉलो की थी या कैसे मैं इसके लिए तैयार किया, जैसे आपने बताया कि 35-40 टॉपिक्स द पीपल दे विल चूज, नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट इज द हाँ. सोर्स.
Source, actually, I haven't joined any coaching. No notes material. No need to join any coaching, wasting 40-50,000 in that. Exactly. No need. Hmm. It's a waste of money, sheer waste of money. Money and time So all also. as well, energy Yeah. as well. Yeah. So no need of all these things. You Hmm. just make a, you just previous year's question, you see what are questions BPSC asks, you have jotted down all the important points which you think that these are important, and Hmm. then you have a Google, you have phone with you. I have referred Vision IS material, Hmm. which is a monthly compendium of all Okay. the important, which has also sorted like economics different is there, science Ah. and technology is another. So Vision IS, you will get overall you'll get some structure of your answer Okay. that you get from Vision. The Okay. second, you just Google like a BRICS Summit. Just Yeah. Google BRICS Summit. You'll Hmm. BRICS Summit IAS. Just write this in the Google. You'll Hmm. get plenty of materials from that. Drishti is there. Forum Yeah. IAS is there, and all the online. Hmm. Drishti is very nice. Drishti is very nice. The first it comes is Drishti. So Drishti. I'll say Vision IAS, Drishti, Hmm. Forum IAS, and Rao Yeah. at times Rao. I just get all the data from whatever online sources you get, Hmm. and you just add it in your answer. Footnotes only, you just add, just make it a data collection way, like you get something from here, you get something from, add in the footnotes and just make Okay. multiple revision of what you have studied. No Hmm. need of studying from YouTube or anything else. You just study what you have written in your footnotes, make it a Okay. multiple revision, so Hmm. that if you have anything with India and China, you can add it in Sri Lanka as well. Hmm. Yes. You can Some. add this material in India and US also, in Yeah. England also, because you have some connection. Comprehensive strategic partnership, you have some connection it with somebody at Vietnam, so you can add that in with the US also or UK also. So Yes. it will help, multiple revision will help you to remember in exam, that's all. Hmm. And then you can Because interrelate. you can interrelate, that is Yeah. more important. Hmm. Interrelation fetches marks. Yes. And all these are sources, online sources are far more better. And if Hmm. you don't have any idea, like Rohingya crisis, you don't have any idea of it, okay, it's no issue. I am a banker, मुझे कोई मतलब नहीं था म्यांमार के प्रॉब्लम से, मुझे Hmm. बैंक रेट्स एंड एफडीआर से मतलब था. Still Hmm. I was not having any issue with how come. You just join RSTV and LSTV, which is now Yeah. same only, Sansad TV nowadays. Sensitivity. Hmm. You can go there and have big picture. In big picture, you will get all the important burning topics which are prevalent in current affairs, and Hmm. just hear it. Just randomly, if you are traveling, you are doing anything, you are working, in fact, in the kitchen, you just hear what they are saying. They have a Hmm. discussion of environmental pollution or whatever be the current affairs. Yes. So the discussion will give you a perspective of what is happening. अच्छा ऐसा हुआ, ये सत्ता परिवर्तन हुआ, अच्छा अच्छा, मतलब you will get a story of it. आज ट्विन टावर के लिए किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, because they have the idea. अच्छा कुछ Hmm. गड़बड़ हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर 32 मरला का बना दिया गया था, 24 स्टोरी शुड बी देयर. नो नीड टू स्टडी. सो इसमें किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई विजन मटेरियल नहीं निकाल के देखेगा ट्विन टावर, because Hmm. everybody knows what is happening. The Yes. same is with RSTV and LSTV. Make a habit of just listening what is going on in the discussion. They have a very enlightened panels are there in Hmm. LSTV and RSTV, so you can hear their views as well. You will get some idea and you will have a perspective building. Hmm. So Exactly. these are a conceptual clarity, you can go for that. And for Hmm. that, this not don't include it in your study hours. You are Hmm. just moving somewhere, you are in a family function or whatever, you are just in your free time, you just hear LSTV and RSTV. This Yeah. will give you a broad perspective of any of the situation happening around the world. Yeah. Okay. That's all. Yeah. So, let's conclude. So, ma'am, she was telling कि आप DI और हिस्ट्री से जितना भी हो सके टाइम बचा करके आप अपने करंट पे ले आओगे, तो वो आपको 4-5 इवन 10 नंबर ज्यादा आप उसमें वहां पे फेच कर पाओगे. हाँ. तो ये कंक्लूडिंग था. अब इसे कैसे करना है मैम ने एक्सप्लेन किया. अब हम मैम की GS2 की स्ट्रेटेजी पे चल